I bet the audience also wants to see what's the result of it, and it's all behind these drapes as of now. But we asked people here today that what makes, if they want to be a guest girl, you know, what are the qualities they have? So tell me, what makes you the guest girl today? Well, you know, being a guest girl for me is, it's a really big deal, because the most beautiful, iconic women have been a part of these campaigns, and now it's 3 decades of Guess. It's one of the, you know, most iconic, you know, brands in the world. And to be a guest girl, and like, you know, when I went to New York this time, and to pick up the magazines and you know, see कि अच्छा सामने Julia Roberts है और पीछे मैं हूँ, you know, it was kind of like, whoa. Is it surreal? Cool. No, but more than that, you know, when you walk into the store, or when you walk into the factory and you see, you know, like Claudia Schiffer, and you see Anna Nicole Smith, and you see all these really incredibly beautiful women, and then brown me, which doesn't look like any of the other girls before, because I'm suddenly Indian, but it's really great. For me, that was a big achievement, you know, to see that Guess has gone for diversity this time, and taking on an Indian person for a global campaign, and that for me was a big achievement. I was very excited about that. Well, usually I work through New Year's. It's happened to me every year, but this year I've decided to take about 10 days off to be with my family. But on New Year's Day, I'm working again. New Year's Eve, first time I'm working on New Year's Eve, like I'm performing. But otherwise, I'm taking about 10-15 days off. So for me, that's a very strange thought, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगी अपने आप के साथ. I've never taken a holiday. पहली बार in about 15 years I'm taking a holiday, so I'm very nervous about my holiday. देखिए, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, मैं जहाँ पर भी दुनिया में जाती हूँ आर्ट को अप्रिशिएट करती हूँ. सरहद, बॉर्डर्स, ये सब मैं बिलीव नहीं करती इसमें, और मैं बिलीव करती हूँ कि आर्ट जहाँ भी जाता है सिर्फ प्यार को पैदा करता है, एंड वो चाहे किसी भी सरहद के पार. This is a film related question. You're doing a film with Ranbir for Zoya. I'll wait for the official announcement to be made by the production house. I wanted to say that I feel you're the most gorgeous actress right now in Bollywood. Super stunning and very gorgeous and very beautiful. How do you maintain that? I mean, you're a style icon for the people around here in today's generation. How do you? Thank you. I'm very overwhelmed by what you're saying, but I think it's very important to be yourself. You know, most of the time we always try to be something which we want to be, but as soon as you start accepting yourself for who you are, and dressing like that, acting like that, if you're happy, be happy. If you're not, don't. When you stop really caring, I think, which doesn't mean become rude, of course not, but I think that's when inherently, you know, a certain air of confidence surrounds you. प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे, गुंडे का एक प्रोमो आ चुका है और टीजर आ चुका है और यकीनन जितने भी फैंस हैं आपके, मीडिया भी सब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आजकल आप सिंगिंग में ज्यादा मसरूफ हैं. अरे 2 गाने क्या आ गए, मेरे 4 फिल्में तो आई हैं. यस, वेरी ट्रू. लेकिन अब गुंडे का इंतजार कर रहे हैं, गुंडे का ही बहुत इंतजार है. पहला टीजर आ चुका है, आप कहीं मिसिंग है उससे, तो ये क्या प्रमोशनल स्ट्रेटेजी है या फिर यू नो क्या वजह रही है? आप और क्या हो सकता है, आप बताइए मुझे. नहीं, प्लीज यू लेट मी नो, हाउ वुड आई नो? नहीं, आपने ऑप्शन दिया ना, प्रमोशनल स्ट्रेटजी है या यू नो बेटर देन मी, या तो आप बताएंगे ना. ये ऑब्वियसली प्रमोशनल स्ट्रेटजी है. टाइटल रोल गुंडे है, एंड द बॉयज प्ले गुंडेज, which is why the introduction for them was what was important. ये टीजर है, अभी थिएट्रिकल में बाकी सारे कैरेक्टर्स, मैं, इरफान, एंड ऑफ कोर्स विद द बॉयज. आपको फिल्म के बारे में पता चलेगा, एंड yeah, that's why it was. Oh, I have a very long list and very high standards. Well, he has to be a gentleman. That's very important. He has to be intelligent, someone I respect, and funny. And I mean, by funny, I don't mean stupid funny. By funny, I mean witty funny. You know, charming, and basically a male version of me. He needs to be an achiever. It doesn't matter if he's an actor or he's not an actor. I would never respect a guy who's not an achiever. Thank you. I
mean, that was very unfortunate, what happened. But I mean, you get a lot of, it's, okay, when you have a face to a campaign which is not conventional, like it happened to me with NFL as well, because it's an all American, game, and my song and me being the theme for it. There are a bunch of people who say racist comments and who will say ki acha, what is your need, you're not American and all of that. But I really believe that the face of the global girl next door has changed. She's not just a certain type. She can be anyone. She can be Indian, Brazilian, American, German, anybody. And I think most of these campaigns, the brand that you mentioned, Guess, and everybody who's going forward showing diversity is only doing it because of that, because the global face of the girl next door is different. एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो महिला होने के नाते हरासमेंट हर लड़की की ज़िंदगी में कभी ना कभी हुआ है. उसको आप जितना भी कह लें, वो किसी तरह का भी, ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल हरासमेंट हो या कुछ ऐसा, बट हरासमेंट हर तरीके से हुआ है. क्योंकि, और स्पेशली, एंड आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस, क्योंकि स्पेशली हमारे देश में जो अपब्रिंगिंग रही है लड़कियों के व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स की, जब बेटा वंश को आगे लेकर जाता है और लड़की की अहमियत उतनी नहीं होती, उसको स्कूल भेजने की ज़रूरत नहीं होती, वगैरह वगैरह. तो आई थिंक वो एक जब माइंडसेट बदलेगा, जब माएँ अपने बेटों को सिखाएंगी कि तुम अपनी बहन की भी उतनी ही इज्जत करना, तुम्हें अपनी बहन की भी उतनी इज्जत करनी चाहिए जितने अपने बाप की करते हो. जब माएँ अपने बेटों को सिखाएंगी कि जब बहू घर आती है वो हमारे घर की लक्ष्मी है, जो हमारे कल्चर में हमको सिखाया जाता है. हम दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के लैंड से आए हैं. तो बहुत अनफॉर्चुनेट है. आई थिंक ये माइंडसेट चेंज करना ज़रूरी है. जब आदमी लोग खुद बाहर जाकर कहेंगे और अपने एग्जाम्पल से दिखाएंगे कि औरत की इज्जत क्या होती है, आई थिंक तब ये माइंडसेट चेंज होगा. तो जब हरासमेंट का, आई थिंक बिकॉज हम अनफॉर्चुनेटली अभी इस सिचुएशन में हैं और वक्त लगेगा ये माइंडसेट बदलने के लिए, क्योंकि ये सालों से हमको सिखाया, हमारी तालीम ही ऐसी रही है. तो जब तक ये बदलता नहीं है, आई थिंक वुमेन नीड टू लुक आउट फॉर ईच अदर. हमको एक दूसरे का ख्याल रखना ज़रूरी है. हमको जानना, अपना ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे और कोई नहीं रखेगा. आई थिंक जब मैं 17 साल की उम्र की थी एंड आई बिकेम मिस वर्ल्ड, द फर्स्ट टाइम आई हर्ड दैट आई हैड मेड इंडिया प्राउड वाज देन, and my entire career started from there, and I feel really happy. I hope that it, for me, it's a big thing when I step out into another country and I have to talk about my country, because I'm very proud to be Indian. I'm extremely proud to be Indian. So when I go out there, my Indianness is what I wear best, and I think that's what people like me for. That I'm not afraid to be who I am.